So in this video lecture series, we are going to study a very interesting and a very booming topics in today's era, that is pharmacovigilance. Now this is one of those topics that is in very hype amongst freshers and amongst people who are looking for career opportunities. So I said, why not make a video on something that is on boom? Pharmacovigilance is basically a Greek word. So I would rather look at the word before starting anything else. Okay, because you should study in that manner where you understand the topic, understand the fundamentals, so that when you're sitting in front of an interviewer, you are able to spit out good terms. So pharmacovigilance hota kya hai? First of all, it is a Greek word. ठीक है, it is a Greek word. तो अगर आपने मेरी फार्माकोलॉजी के ऊपर वीडियो देखी होगी, फार्माकोलॉजी बेसिक इंट्रोडक्शन, फार्माको का मतलब क्या होता है? फार्माकॉन मीन्स व्हाट? इट मीन्स ड्रग. विजिलेंस मीन्स व्हाट? टू लुक आउट फॉर, टू कीप अ वॉच. बेसिकली हम बोलते हैं ना कि बी विजिलेंट व्हेन यू आर वर्किंग विथ microorganisms in a microbiology lab, or be vigilant while writing your exams or reviewing a task. Why we are saying to give the best attention possible. So this is how I've understood in a layman term that what does pharmacovigilance would mean: to keep a watch on drugs. But हम drugs पे watch क्यों करें? Like why should I watch on keep a watch on drugs? I made a medicine, ठीक है, I get it cleared after clinical trial through the regulatory authorities of various countries. Now it's marketed. Why should I keep a watch on it? The question arises. So, the reason being, what happens is medicines and vaccines, although have transformed in the prevention and treatment of diseases, and in addition to their benefits, the medicinal products may also have side effects. We all are very much aware with the side effects of medicines as well. And it is not just about the side effects that are known. You know, when you are doing a clinical trial, you observe the side effects, and those are listed as the potential side effects of the medicine when it is marketed. But there might be some other side effects which happen, so some of which may be undesirable or unexpected. Now what does pharmacovigilance does is, as per WHO, they have defined pharmacovigilance as the science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of what? Adverse effects or any other medicine or vaccine related problem. So they said that it is a science, so it's a study in itself, and a lot of activities are involved in this science. What are those activities? Relating to the detection. So first we will detect the adverse effect if there is any. We will assess that adverse effect, we will understand it, and it's not just about detection and assessment, we will prevent also. Okay, so when someone asks you of the definition, or someone asks you what is pharmacovigilance, and yes, I believe in understanding the concept first and then like sort of going into the bookish language. But when you are sitting in front of an interviewer who is there to assess your skill, he doesn't want those three idiot dialogues where what is a machine and then zip up zip down, because they don't have that kind of time, and frankly that is not the culture we see on a day-to-day life. So in that concise time, my belief is that if you spit out answers with keywords, it makes the listener understand that, oh yes, I'm talking with a person who has quite some knowledge of the field. Especially if you're a fresher, even if you're experienced, use jargons and lots of keywords so that your this thing is enhanced, your profile, your way of speaking, your overall performance is enhanced in front of the listener. So what is pharmacovigilance? It is the science and technology relating to what? It is basic English. The first line itself is just basic English. The keywords are written in the red color ink. Like it is a science and activities relating to what? Detection होता है पहले उन adverse effects का, assessment होता है,
फिर उन्हें अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उसे कैसे प्रिवेंट किए वो देखा जाता है. So all medicines and our vaccine undergo rigorous testing for safety and efficacy through clinical trials. I have put videos regarding clinical trials and drug development also. You can watch them out through clinical trials before they are authorized for use. So we all know that they undergo very rigorous trials when they are given for drug approval to get marketing approval. But sometimes the clinical trial process involves studying these products in a relatively small number of selected individuals for a short period of time. That is what I was saying above when I was giving you the example of side effects in clinical trials. But those are on a couple hundred or thousand people, right? I have made a group of those people, and whatever side effects I'm getting is in those number of people only, and to also for a short duration of time. But certain side effects may only emerge once these products have been used by a heterogeneous population. Good word to be used here, heterogeneous. Heterogeneous population means variety, different veracity of population, including people with concurrent diseases and over a long period of time. So therefore we need pharmacovigilance, because it's not just about we can't just depend on the clinical trial side effects. We need something of this sort. Now it is my habit of actually so this is all done to ensure safe and effective use of medicine. Obviously, we are doing all of this jhanjat. Why? Because we want safe and effective use of the medicines and the establishment of robust systems for reporting undesired side effects. Okay, so there are many regulatory bodies that like WHO, like European Union, like US FDA, that has this robust system. They have this wholesome system of if you have taken, like the drug is now in the market, you have taken it, you have got some undesired side effect from the medicine, you can report it on their websites, you can call them up, and it is known as adverse drug reaction. Okay, so all this funda, the basic reason why this all is done is this whole subject and branch is there is for the reporting of ADRs, and it is crucial because now it is in a wider population, and what all impact it can have is yet to be known. And it's not just about having the impact, you're there for the treatment and prevention as well. So now it is my habit, guys, and I think you should also make your habit to actually Google and learn a lot of different types of definitions, so that you know it's not about confusing you, but you actually have this wholesome idea of what it must be. So, drug safety, which is actually of vigilance, is also known as drug safety sometimes, and it is designated with PV. So, they said it is the pharmaceutical science relating to what? Collection, detection. हमने ऊपर पढ़ा था डिटेक्शन से चालू हुआ था, पर इसके आगे अगर आप कलेक्शन भी लिख दोगे तो कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअली वी आर कलेक्टिंग द डेटा फर्स्ट एंड देन वी आर डिटेक्टिंग इट, देन वी आर असेसिंग इट, मॉनिटरिंग. यहाँ पे क्या वर्ड हुआ था? अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे हमने लिख दिया मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ. So the definition is more or less similar, just few words are added, which if you'll add in this definition also, it's no harm, but it's a definition given by WHO, and this is a definition of some sort from one of the websites. So what is it? It's the pharmaceutical science relating to collection, detection, assessment, फिर monitor किया और कुछ find out हुआ तो उसका prevention भी करना है of what? Of adverse effect. So now I'm hearing the word adverse effect for I think the second and third time. फर्स्टली मैंने यहाँ सुना था, सेकेंड टाइम यहाँ पर, एंड थर्ड टाइम यहाँ पर. And this whole science, this whole subject is based on adverse drug effects, adverse drug reaction, adverse drug events. Okay, and यूरोपियन यूनियन जो है उसने भी पीवी को कैसे डिस्क्राइब किया है? यूरोपियन यूनियन सेड पीवी इज द प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस. वाई? बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, राइट? डाउन द लाइन हम देखें तो प्रोसेस ही तो है. पहले कलेक्ट किया, डिटेक्ट किया, असेस किया, मॉनिटर किया, प्रिवेंट किया. सो इट इज अ प्रोसेस इन साइंस ऑफ व्हाट? ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, जो कि क्या है? एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए, एंड टेकिंग एक्शंस टू रिड्यूस द रिस्क.
तो हम उसमें मॉनिटर करेंगे क्या क्या चीज़ें सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, ताकि हम जो रिस्क है उन्हें रिड्यूस कर सके और इंक्रीज कर सके क्या, द बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिन. Why is all done? Why is it all done? It's done for the safety of public health. Okay. So what happens basically in pharmacovigilance is that the information is received from patients and healthcare providers. आपको, if a doctor has given you a medicine and the doctor has said you and warned you about the side effects as well, it's a new drug that is launched in the market. If you want, you can correlate it with COVID vaccines, right? That COVID vaccines were also one of those ways by which the drugs were introduced to us for the first time, the vaccines were introduced to us for the first time. So there are certain side effects that's already written in the, if you will see that the bottle of that medicine itself, but there will be some side effects that are like the doctor, the patient will come to the doctor and say that, oh, you prescribed this medicine, but I don't know how, but my leg is paining, or my leg is having that weird sensation. So that doctor will also inform the regulatory authorities, or will inform the pharmaceutical company, the one who manufactured it, via pharma vigilance agreements, as well as other sources such as medical literature. So these information are received from patient and healthcare providers via pharmacovigilance agreements, as well as other sources such as medical literature plays a critical role in providing data necessary for pharmacovigilance to take place. So this is about data. And in order to market or test a pharmaceutical product in most countries, adverse event data received by the license holder, usually a pharmaceutical company, must be submitted to who? The local drug regulatory agency or authority. So ultimately, pharmacovigilance is concerned with identifying the hazard कि okay, maybe ये बहुत बड़ा एक बायो हजार्ड हो सकता था, हमने एक छोटे लेवल पे ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, and associated with whatever pharmaceutical product they are selling, and with minimizing the risk of that harm. तो हमें इसे minimize भी करना है, ये नहीं कि हमने monitor कर लिया, assess कर लिया, we have monitored it, assessed it, but we can't do nothing about it, but we have to minimize it. Okay. Companies must conduct a comprehensive drug safety and pharmacovigilance audit to assess their compliance with the worldwide laws, regulation, and guidance. So this is what I have to say about, in a brief description, I would say, of pharmacovigilance. Okay. Now, as you have seen throughout the video, that the word adverse drug reaction has been coined a lot of times. So in the later part of the video, like the coming part of the video, we are going to discuss about adverse drug reaction. So adverse drug reaction is nothing but any noxious change which is suspected to be due to a drug occurs at doses normally used in man, requires treatment or decrease in dose, or indicates caution in the future use of the same drug. So what they said as an adverse drug reactions definition is any noxious changes, okay, which is suspected to be due to a drug. Now this line is of utmost important, that it says it's due to a drug. Here is where
all the different comes. So when someone asks you what is adverse drug reaction, do you observe that in ADR the D means drug is present? That means whatever adverse reaction there is for sure 100% because of a drug. So we can say ADR occurs due to drugs only. So adverse drug reaction is any noxious change which is suspected to be due to a drug. It occurs at doses normally used in man. So हमें यहाँ से क्या पता चला? हम ये नहीं बोल रहे कि अगर आपने ज़्यादा खा ली होगी दवाई तो आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा. हम कह रहे हैं अगर 100 mg खानी चाहिए थी, 100 mg प्रिस्क्राइब हुई, खाई, उसके बाद भी कोई नॉक्शियस अनइंटेंडेड अनटुवर्ड चेंज आया, सो दैट मीन्स आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ, which requires treatment. Obviously हम आपको मरता हुआ नहीं छोड़ेंगे, I'm saying that as a joke. Or decrease in dose or indicates caution in the future case of the same drug. Okay, so the study of this ADR, ये ADR adverse drug reactions की study करना ही पूरा फार्माकोविजिलेंस का कोर है. ठीक है, मुझे यही तो पता लगाना है कि अनइंटेंडेड नॉक्शियस चेंजेस क्या क्या आए ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद. नाउ इससे एक सवाल आता है. ओके, बिफोर दैट क्वेश्चन लेट्स लुक एट वन ऑफ द डेफिनेशंस गिवन बाय यूरोपियन यूनियन फार्माको regulatory agencies. Is it's a noxious and unintended response to a medicine. So they also said a same thing. Now एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ADR साइड इफेक्ट्स होते हैं या ADR को ही हम साइड इफेक्ट्स बोलते हैं या एलर्जी बोलते हैं. और अगर हम कह रहे हैं कि हमें इन्हें मॉनिटर करना है, ये अनटुवर्ड्स अनइंटेंडेड नॉक्शियस चेंज होते हैं, देन हाउ कम हम इसे साइड इफेक्ट ना मतलब साइड इफेक्ट मान लें और फिर हम क्यों रिपोर्ट करें या हम इसके बारे में क्यों पढ़े? ये तो हमें डॉक्टर्स ऑलरेडी बता देते हैं ना कि ये साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही. तो इसी क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है. द आंसर इज, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था एक बच्चे ने कि ADR दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे जो कॉमनली हम बोलते हैं साइड इफेक्ट या एलर्जी से कैसे डिफरेंट है. सो एलर्जी इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीडिएटेड बाय एन इम्यून रिस्पॉन्स, लाइक आपको रैश हो गया या हाइज हो गई. बट साइड इफेक्ट इज एन एक्सपेक्टेड एंड नोन इफेक्ट. आई नो दैट व्हेन आई विल ईट द मेडिसिन ऑफ एंटीबायोटिक्स, आई नो उसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है कि कहीं ना कहीं मेरी टॉलरेंस बिल्डअप होती जाएगी टुवर्ड्स एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन एज द डोज इंक्रीजेज एंड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिसिन इंक्रीजेज. सो साइड इफेक्ट क्या है ऑफ हार्ट मेडिसिन लाइक BP की मेडिसिन का कि व्हेन यू विल स्टॉप ईटिंग इट abruptly and when you will again start the dose, you will have to start the dose from a higher dose because जिस पीरियड में आपने BP की मेडिसिन नहीं ली होगी उसमें your body will know and your heart will start to increase the BP. तो BP की दवा खाने से भी जो बोलते हैं ना कभी कभार BP बढ़ जाता है, is the reason this that you have to consult a doctor and eat doses that are prescribed to you and required by your physical ailments like your body. So side effects are what expected. हमने यहाँ क्या पढ़ा? एडवर्स रिएक्शन आर अनइंटेंडेड, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था पर हो गया. एंड नोन इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स तो हमें पता रहता है क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे कि ये होगा, तो हमें पता रहता है कि ऑलरेडी फ्यूचर में इसे खाने से ऐसा हो सकता है. पर एडवर्स रिएक्शन की आपको BP की गोली खा रहे हो एंड सडनली आपके नोज ब्लीड होने लगे और यू हैव इरेगुलर यू आर ईटिंग एंटीबायोटिक्स एंड यू हैव इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, सो दैट वुड बी एन अनफोर्सीन साइड इफेक्ट. मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स में भी नहीं देखा, अब अचानक से वो इंडिया में गया या मान लो अफ्रीका में गया एंड दिस पर्टिकुलर साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. इसको लेमन टर्म्स में हम साइड इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि हम साइंटिफिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, हम मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं. पीपल दे से इट साइड इफेक्ट बट वी शुड ट्रीट इट एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड दैट इज वेयर ऑल द कंफ्यूजन अराइजेस. क्योंकि फिर हम जो अपने मिथ्स बचपन से पढ़ के वापस इंडस्ट्री में जाते हैं यहाँ पे वो दिक्कत करता है. तो एडवर्स रिएक्शन क्या हुआ? इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ ड्रग. साइड इफेक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ ड्रग बट साइड इफेक्ट हमें पता होते हैं, एक्सपेक्टेड एंड नोन इफेक्ट होते हैं कि मुझे पता है कि सर दर्द की गोली खाने से कभी कभार चक्कर आ सकते हैं, आपको डॉक्टर में भी बोले. पर सर दर्द की गोली खाने से अगर आपको मान लो कोई रैश हो गया और आपने जैसी गोली खाना बंद किया वो रैश चला गया, सो दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन बिकॉज वो अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स था और वो केवल एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में देखा गया है, पर्टिकुलर पर्सन में देखा गया विच वॉज नॉट सीन बिफोर ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स. सो उस पर क्या होगा? अब अगेन गोइंग बैक टू द प्राइमरी डेफिनेशन, ऐसे डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम है डिटेक्ट करके असेस करेंगे और फिर उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पे वर्क करेंगे. डू वी नीड टू डिक्रीज द डोज or do we need to provide some kind of another treatment for that? So
To sum up, ADR is a harm directly caused by the drug at normal doses. ये लैंग्वेजेस मैं इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि दीज वर द ट्रिकी क्वेश्चंस. वो आपको बोल देगा इंटरव्यूअर कि हाँ एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो तब होता है ना जब आप मतलब एक्सपेक्टेड डोज से ज़्यादा खा लो. तो नहीं वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में नहीं आएगा. एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो उसकी हमारी वो जो कहते हैं उसको, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, कि हमारी हाँ कंडीशन ही यही है कि इट विल बी कॉज बाय अ ड्रग ओनली एंड इट विल बी कॉज एट नॉर्मल डोजेज ओनली. ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल यूज, ऐसा नहीं कि राह चलते, नॉर्मल यूज. सो दिस साइड इफेक्ट टर्म इज इट टेंड्स टू नॉर्मलाइज द कंसेप्ट ऑफ इंजरी फ्रॉम ड्रग कि हाँ ये तो साइड इफेक्ट ही है. और दूसरी चीज लोग बोलते हैं कि साइड इफेक्ट जो है कभी कभार पॉजिटिवली भी लिया जाता है. जैसे साइड इफेक्ट डजंट नेसेसरली मीन कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही आया. ठीक है, कभी कभार साइड इफेक्ट से अच्छे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं. राइट, समटाइम्स there are cases where you took a drug, you observed a side effect and that side effect treated your another ailment. So फिर उस ड्रग का वहां पे यूज किया जाता है. तो दिस वॉज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड एलर्जी. अब यहाँ पे 3 वर्ड्स आई विल कॉइन एंड थ्रो एट यू. So first of them is ADR, that is adverse drug reaction. ये आपने ऊपर पढ़ ही लिया. फिर दूसरा आता है, the next one is adverse event. Okay, और तीसरा आता है adverse effect. Sorry, adverse effect इसको कर लो AE को, and this is adverse drug event. Adverse ड्रग इवेंट. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऊपर पढ़ लिया. एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, विच इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम साइड इफेक्ट. एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, सॉरी एडवर्स ड्रग इवेंट क्या होते हैं. दीज आर द 2 important terms and this will be asked every time. All these 3 definitions will be asked every time you go for a pharmacovigilance interview. ओके और ये बेसिक है. अगर आपने यही नहीं अच्छे से बताया तो वो आगे के क्वेश्चंस पूछेंगे भी नहीं. और इन सब में डिफरेंसेस हैं. ठीक है, और ये तीनों कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं. अगर एटलीस्ट नॉट फॉर यू बट एटलीस्ट इट वॉज फॉर मी व्हेन आई वाज अ बिगनर. तो इसीलिए हम इसे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमें पता रहे कि रिएक्शन क्या है, इफेक्ट क्या है और इवेंट क्या है. ठीक है, so discussing the differences, firstly we will start with ADR because we have already discussed it above. So they said adverse drug reaction is a response to drug which is noxious and unintended. ये तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं. And which occurs at doses, so it occurs at doses normally used in man for what? Prophylaxis, diagnosis, therapy of the disease or other modification of physiological functions. So this is what adverse drug reaction means. Now let us understand what is adverse drug event. So it's any untoward medical occurrence in a patient और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान So this is the FDA definition of adverse drug event. They say that it is any untoward medical occurrence in a patient or a clinical investigation subject which was administered with a pharmaceutical product and which does not have a causal relationship with this treatment. So this is what happens in adverse event. The main difference from this definition only you can find out is that here the sole reason for an adverse reaction is the drug
and what the drug which was administered at the normal dose. You were casually taking it for your treatment, but then you had an unintended occurrence. Okay. But in adverse event, they say that it is any untoward medical occurrence in a patient or in a clinical investigation. So when you are under clinical trial also, if there is any event that occurs, it will be considered as adverse drug event. And they said that it does not have to have a casual relationship with the treatment, meaning it can be because of the drug, or it can be due to other reasons as well. So an adverse drug event is an injury. Basically, it is an injury resulting from the use of drug, resulting from the drug. Okay. Under this definition, the term ADE includes harm caused by the drug. तो this drug का क्या harm cause कर सकते हैं, जैसे ADR cause, कोई reaction उसको दिख गया, ठीक है, या फिर overdose हो गया. यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, at normal dose. यहाँ पे अगर overdose हो गया तो that is an event then. And harm from the use of drug, तो ये तो कॉज बाय द ड्रग है कि ओवरडोज हो गया, या जी यूज बाय द ड्रग में क्या आता है, डोज रिडक्शन. आपने डोज को रिड्यूस करा, अगर कोई उसकी वजह से हार्म आया देन. एंड अगेन अगर आपने उसका डिसकंटिन्यूएशन किया ड्रग थेरेपी का, उसके बाद कोई रिएक्शन आया, उसके बाद कोई इफेक्ट आया, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज एडवर्स ड्रग इवेंट. तो एडवर्स ड्रग इवेंट्स मे रिजल्ट फ्रॉम मेडिकेशन एरर बट मोस्ट डू नॉट. तो इसमें जरूरी नहीं है कि मेजर फैक्टर ड्रग ही हो. इफ समवन सेज टू यू दैट ड्रग इज द मेजर फैक्टर, ADR. At normal doses it happened, ADR. Drug may or may not be involved in the adverse event, so ADE, adverse drug event. It can be at higher dose, lower dose, or discontinuation of dose, and again ADE, adverse drug reaction. Oh, adverse drug event. So it is directly caused by the drug at normal doses during the normal use. So ADRs are harmful and more unexpected than side effects, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था. And side effects are more predictable than ADRs, plus effects can be beneficial or harmful. तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था. Okay. Now adverse effect और ADR में क्या डिफरेंस है. So adverse drug reaction क्या है, appreciably harmful या unpleasant reaction resulting from an intervention related to the use of medicinal product. Adverse effect is usually predict hazard from future administration. Okay, यहाँ पे हमारे पास क्या कीवर्ड है, इट इज अ प्रेडिक्टेड हैजार्ड. इसमें अनइंटेंडेड क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कि इफ यू आर ईटिंग एंटी एमेटिक ड्रग यू वुड गेट ब्लड इन योर वॉमिट्स. ऐसा कोई साइड इफेक्ट हमने देखा ही नहीं था ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स और एल्सवेयर. बट ये आया निकल के जब प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो देयरफॉर दिस इज अनइंटेंडेड. बट एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं दीज आर जनरली प्रेडिक्टेड. हम ऐसा बता सकते हैं कि हाँ ऐसी भी एक सिचुएशन आ सकती है, हो सकता है आप सिरदर्द की गोली खाओ तो आपको अनईजीनेस लगे. दैट इज अ प्रेडिक्टेड हैजार्ड फॉर फ्रॉम फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन. एंड इट ऑल्सो वारंट प्रिवेंशन. इट ऑल्सो कॉशियस यू अबाउट द प्रिवेंशंस, या फिर उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा तो वो, या फिर उसका कोई ऑल्टरेशन होगा डोज रेजिम में तो वो. तो इसमें क्या देखा मैंने ADR में डिफरेंस कि इट इज अनइंटेंडेड in ADR, and if it is predicted hazard then it is adverse effect. So adverse drug event is harm caused by appropriate or inappropriate use of a drug. Appropriate or inappropriate. But यहाँ पे अगर हम बात करें inappropriate use of a drug, whereas adverse drug reaction are a subset of these events where harm is directly caused by a drug under an appropriate use, that is at the normal doses. Now a slight difference between adverse drug events and side effect or adverse effects का क्या है. It is more or less the same thing and I use interchangeably, which is incorrect. So adverse events are unintended. Again इसमें और इसमें भी अगर हम difference डालें तो this is also unintended या untowards medical occurrence है. Whereas if you talk about
Side effect, it is a secondary unwanted effect. I'm talking about the definition of side effect that occurs due to a drug therapy. So these are more or less the differences between adverse drug reaction, adverse event and adverse effect, right? तो मैं मेनली अगर वो आपसे पूछे एडवर्स ड्रग रिएक्शन वर्सेज एडवर्स इवेंट, सो हमने क्या पढ़ा, इट इज अनइंटेंडेड अकरेंस मेनली ओनली कॉज बाय द ड्रग एट नॉर्मल डोजेस. एडवर्स इवेंट इज ऑल्सो अनटुवर्ड्स मेडिकल अकरेंस विच मे और मे नॉट बी कॉज बाय ड्रग एंड इट कैन बी कॉज बाय ड्रग अंडरडोज, ओवरडोज और डिसकंटिन्यूशन. ओके, so in adverse drug reaction casualty is always related and in event it is may or may not be related. Now a golden line that arises out of this differences is that all ADRs, all adverse drug reactions are adverse event, but not all adverse events are adverse drug reaction. ऐसा क्यों होगा? I will give you a moment. You discuss in your amongst yourself कि सारे ADR adverse events होते हैं, but सभी adverse events ADR क्यों नहीं होते? सारे ADR adverse events होते हैं, but सारे ADs मतलब adverse events ADR क्यों नहीं होते? Why is it this not possible and this possible? ठीक है, I know most of you all would have got the answer till now. The reason is कि see, हमने क्या बोला? Let's understand. ADR एंड AE दोनों ही अनइंटेंडेड है, ये तो हमने अनइंटेंडेड अनटुवर्ड्स हैं, ये तो हमने पढ़ लिया. बट ये 100% ड्रग के कारण हो रहा है, इसमें ड्रग या और भी रीजंस शामिल हैं, तो 50-50 हम मान लेते हैं सिचुएशन में. सेकेंडली, ड्रग के कारण हो रहा है बट एट नॉर्मल डोजेस. इसमें क्या हो रहा है, ड्रग के कारण हो रहा है बट डोजेस वेरी कर सकता है. कैसे? ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है एंड डिसकंटिन्यूएशन की वजह से भी हो सकता है. तो ड्रग वर्ड मेंशन हो रहा है, ठीक है. अगर मैं बोलूँ एडवर्स इवेंट में एक ड्रग की वजह से, ठीक है, एक अकरेंस हुआ, ड्रग की वजह से कोई इवेंट हुआ, क्योंकि डोजेज इसमें वेरी कर सकते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि नॉर्मल डोज पे ही कोई इवेंट हो गया, ठीक है, या मान लो नॉर्मल से थोड़े ऊपर में एक इवेंट हो गया, तो वो ऑल ADRs आर एडवर्स इवेंट्स बट नॉट ऑल AEs आर ADRs. मतलब कि इसमें तो हमने ये बोल दिया ना कि 50% चांस है ड्रग के कारण होने या ना होने के, नॉट प्रिसाइसली 50%, बट मैंने जो लैंग्वेज यूज की थी मे और मे नॉट बी ड्यू टू ड्रग्स. तो जब वो मे और मे नॉट की सिचुएशन आ रही है तो 100% ड्रग वाली सिचुएशन इसमें नहीं बैठेगी. दैट इज वाई ऑल ADRs आर AEs बट नॉट ऑल AEs आर ADRs. ओके, ये बहुत अच्छी गोल्डन लाइन है एंड दैट विल confuse you a lot, so this is why I'm repeating over and over. ठीक है, और इन सब का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस AE से कंपेयर करें तो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इट इज़ प्रेडिक्टेड हजार्ड, जिसके बारे में हमें पहले ही बता दिया जाता है, और पहले ही बता दिया जाता है तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. एंड इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एनी सेकेंडरी अनवांटेड इफेक्ट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस. ठीक है.